So very good afternoon, everyone. So today we are going to see the next part of gravitation chapter. So in the last session already we discussed so what is the meaning of physics, what are the importance of physics, what do you mean by gravitation, gravitational force, and what is the definition of force and motion. So before starting today's session, we recall something from your textbook. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन को क्या है रिकॉल करना है. सो ऑलरेडी वी डिस्कस इन द 9th स्टैंडर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस. So we know that there are three laws of motion. So before starting today's session, we discuss about the something recall. So after this, we discuss about the what is the meaning of a circular motion, what is meant by centripetal force, and what are the different kinds of force familiar with us. And the last concept is Kepler's laws of motion. It's a very important concept for our syllabus from this chapter. इस चैप्टर से जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन, डिस्कस इन दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो आज के सेशन में फर्स्ट कैन यू रिकॉल समथिंग में क्वेश्चन हमें पूछा है. सो व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन. सो वी नो दैट देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन के क्या तो थ्री लॉज ऑफ मोशन है, तो वन बाय वन उसको हम क्या है देख लेंगे. देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Newton's laws of motion. So there are three laws of motion. Now see the first law of motion. अब हम पढ़ लेते हैं. State first law of motion. First Newton's law of motion या first law of motion. Only state. उसको हमें क्या करना है? Only state Newton's first law of motion. An object continues to remain at rest in a state of uniform motion along a straight line unless an external balanced force acts on it. Now see, जब तक हम किस चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो चीज क्या बोलो तो रेस्ट ही रहेगी. When we apply the force of an object, objects come in a motion. जब तक किसी चीज के ऊपर हम फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो चीज क्या बोलो तो रेस्ट कंडीशन में रहेगी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट अ रेस्ट इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it. जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक वो चीज क्या बोलो तो उसका ना पोजीशन चेंज होगा ना उसका क्या बोलो तो मोशन क्या है चेंज होगा. नाउ सी an object continuous. So write down an object continuous to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. This is the statement of first Newton law of motion. Now see, an object continues to remain at rest. एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू क्या बोलो तो रेस्ट में रहता है
or in a state of a uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक वो क्या बोलते तो रेस्ट कंडीशन में ही रहता है. Understand? This is the statement of first law of motion. Now see the next law of motion, second law of motion. So what are the statement of second law of motion? This is the revise. Understand? ये मोस्टली हमारे कर तो 9th स्टैंडर्ड में हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ा है. उसका हमें क्या करना, ओनली रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. नाउ सी द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and change of momentum occurs in the direction of the force. Now see, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. जो उसका जो momentum change होगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, is depending upon the force and change of momentum occurs in the direction of the force. उसका जो momentum change होगा वो किसके डायरेक्शन में ऑकर होगा, इन द फोर्स के डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, ऑकर्स हो जाएगा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जो उसका मोमेंटम चेंज होने वाला है वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका मोमेंटम चेंज होगा ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जो मोमेंटम चेंज होगा वो कहां पर ऑकर होगा, तो change in the direction of the force. I don't know. The rate of change of momentum. The rate of change of momentum. The rate of change of momentum is directly proportional. So you know that what is the meaning of a directly proportional and the inversely proportional. इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सो है. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम and change of momentum occurs in the direction of the force. Occurs in the direction of the force. This is the statement of a second law of a motion. Understand? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. जो momentum change होगा वो क्या रहेगा, directly proportional to the applied force and change of momentum, जो momentum change होने वाला है occurs in the direction of a force. Listen. Now see the last law of Newton. अब हम क्या करेंगे, Newton's third law of motion. Third law of motion. Now see next one, third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. ध्यान में रखो, every action has an equal and opposite reaction. तो हर एक एक्शन का जो क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट क्या बोलते रिएक्शन रहता है. नॉट टेक वन सिंपल बॉल. जब हम किसी बॉल को किसी वॉल के ऊपर थ्रो करते हैं, ये एक्शन हुआ तो उसकी तरफ से आ जाएगा जैसा opposite reaction. Understand? So every action has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously.
as simultaneously. So every action has an equal and opposite reaction. तो हर एक actions का क्या हमें equal and opposite reactions क्या force मिलता है, which acts as a simultaneously. So this is the third law of motion. A motion का क्या रहेगा तो third law of motion रहेगा. Understand? First law, second law, and the third. Now the next one concept for our chapter is circular motion and the centripetal force. Explain with the examples. So what is meant by circular motion? Give one example. What is meant by centripetal force? Give one example. तो explain with the example. तो example के साथ हमें उसको क्या करना है, explain कर लेना है. तो first हम explain कर लेंगे what is meant by circular motion and give one example. And what types of forces are we familiar with? Listen, now let's see. What is the meaning of a circular motion? अब हम पढ़ लेते हैं what is the meaning of a circular motion. Circular motion and centripetal force. So explain, define circular motion with one example. Now see, circular motion. The next one concept of our chapter is circular motion. So what is meant by circular motion? Now see, circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotating along a circular path. Now see, circular motion is the movement of an object in a circular path. एक ऑब्जेक्ट क्या बोलो तो सर्कुलर पाथ में क्या है, रोटेट होना, उसको हमें क्या कहना है, सर्कुलर मोशन कहना है. Understand? Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotating along a circular path. So circular motion is a movement of an object rotating along a circular path. एक ऑब्जेक्ट क्या बोलो तो सर्कुलर मोशन में क्या है, घूमते रहना, उसको हमें क्या कहना बोलो तो it is called as the circular motion. Now give one example of a circular motion. A ceiling fan's blades rotating around a hub. हमारा जो सीलिंग फैन रहता है उसके जो ब्लेड्स रहते हैं, उसका जो हब रहता है, उसके राउंड में क्या हो, कंटिन्यूसली क्या हो तो रोटेट होती है. हमेशा सीलिंग फैंस ब्लेड्स रोटेटिंग अराउंड अ हब, उसका जो हब रहेगा उसके अराउंड में क्या हो, कंटिन्यूसली क्या है, घूमते रहते हैं. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ कांस्टेंट हाइट. नाउ सी, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ ऑर्बिट. जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, एक ऑर्बिट में क्या हो तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो, कंटिन्यूसली क्या है, घूमते रहते हैं. सो सर्कुलर मोशन इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्या है, एक सर्कुलर पाथ में क्या है, घूमते रहना, उसको हमें क्या कहना हो तो सर्कुलर मोशन कहना. राइट डाउन सर्कुलर मोशन. फर्स्ट पॉइंट, circular motion. Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotation along circular path. Rotation along circular path is called as the circular motion. Now write the examples of a circular motion. उसके हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. एग्जांपल्स. नाउ सी, an artificial satellite orbiting the earth at a constant height
at a constant height. This is the first example. Now take one more example. A ceiling fan. A ceiling fan's blades. A ceiling fan blades rotating around a hub. Listen. So these are the example of a circular motion. Understand? So an artificial satellite orbiting the Earth at a constant height. The next one example is a ceiling fan blades rotating around a hub. So all of understand what is meant by circular motion and what are the examples of a circular motion. Now see the next one is a centripetal force. What is meant by centripetal force? Next one now see. So write a short note on centripetal force. What is the meaning of a centripetal force? Now see. So first we understand what is the meaning of a centripetal. तो हमें उसका डेफिनेशन जानने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंट्रीपेटल. तो सेंट्रीपेटल का मीनिंग क्या होता है ये हमें जान लेना है. नेक्स्ट वन फोर्स इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स. द नेक्स्ट वन concept is explain, write a short note now. Centripetal force with example. Centripetal force with an example. Now, first you understand what is the meaning of a centripetal. हमें उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. What is the meaning of a centripetal? Now see, centripetal means center seeking. ध्यान में रखो. Centripetal means center seeking. Center seeking. What is the meaning of a centripetal force? Is a centripetal means a center seeking. Understand? Now see, that is the object tries to go towards the center of the circle because of this force. Now see, so what is the meaning of center seeking? The object tries to go toward the center of the circle because of this force. Because of centripetal force, object tries to go toward the center of the circle. सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से उसके कारण ऑब्जेक्ट क्या बोलते हो जो हमारे सर्कल का सेंटर रहता है उसकी तरफ जाने की क्या वो कोशिश करेगा. अंडरस्टैंड? ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स ऑब्जेक्ट ट्राइज टू go towards the center of the circle. Goes towards the center of the circle. Understand? What's next one? Now define centripetal force. अब तक हमने देखा what is the meaning of centripetal. Now see what is the definition of centripetal force. A force acts any objects moving along a circle and is directed toward the center of the circle. This is called as the centripetal force. Now see, a force acts on any object moving along a circle. एक जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में क्या है घूमते रहता है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स क्या हो तो सेंटर की तरफ आने की कोशिश करता है. डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ centripetal force. A force acts on a object moving along a circle and is directed toward the center of the circle. This is called as the centripetal force. All of understand? Not at all. Next point, that is the object. Now see, the object tries to go towards the center of the circle. Towards the center of the circle. Toward the center of the circle because of this force. Because of this force. Because of this force. Now define centripetal force.
A force acts on any objects moving along circle and is directed towards the and is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. This is called the centripetal force. This is called the centripetal force. So all of understand what is the meaning of a centripetal force and what is the definition of a centripetal force. Now see, give an example of a centripetal force. अब हमें क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या है एग्जांपल लेते हैं. Give an example of a centripetal force. The moon revolves around the earth due to the gravitational force exerted on it by the earth. Now see, the moon revolves around the earth due to the gravitational force exerted on it by the earth. मून क्या है, अर्थ के राउंड में क्या होता है, रिवॉल्व होता है. किसके वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ. अर्थ मून के ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक्सर्टेड करती है. इसके वजह से क्या होता है, मून क्या है, अर्थ को क्या करता है, रोटेट करते रहता है या रिवॉल्व होते रहता है. अंडरस्टैंड? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ. अर्थ उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक्सर्टेड करती है. इसलिए मून क्या होता है, रिवॉल्व होते रहता है. So this force is directed toward the center of the earth and it is thus a centripetal force. Now see. So this force is directed toward the center of the earth. ये जो force है वो क्या करेगा, directed toward the center of the force and is thus a centripetal force. The good example of a centripetal force is the moon revolves around the earth due to the gravitational force exerted on it by earth. Understand? This force is directed towards, वो क्या होता है, वो फोर्स क्या है, क्या करेगा, उसको क्या है, सेंटर की तरफ क्या है, खींचने की क्या है, कोशिश करता है. Understand? Now write the give an example of a centripetal force. उसका हमें एग्जांपल देना है एक. अब उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं. Now see, example, उसका हम एग्जांपल लेते हैं. Write down. The moon revolves around the earth due to the gravitational force exerted on it by the earth. Now see, so this force is directed towards the center of the earth, and is thus a centripetal force.
Understand? This one is a good example of a centripetal force. All of understand? Now see the next one question. Name the force responsible for the motion of a planet around the sun. So which force is responsible for the motion of a planet around the sun? कौन सा ऐसा फोर्स है इसकी वजह से all planets revolve around the sun. Now see next one question. Name the force next one question. Name the force responsible for the motion of a planet around the sun. So which force is responsible for the motion of a planet around the sun? So all of you know that all planets revolve in a sun in a orbit. जितने भी हमारे planets हैं वो sun के राउंड में क्या होता है revolutions करते रहते हैं in a fixed orbit. Now see, so which force is required and responsible for the motion of a planet around the sun? Now see the answer. The planets revolve around the sun due to the gravitational force exerted on it by the sun. Now see. So all planets revolve around the sun due to the gravitational force exerted on it by the sun. Understand? जो सन है वो प्लैनेट्स के ऊपर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एक्सर्टेड करता है इसके कारण क्या होता है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सो अ planet revolve around the sun due to gravitational force exerted on it by the sun. A planet revolve around the sun due to gravitational force exerted on it by the sun. Understand? Now the next one question. What types of force are we familiar with? Now see. So what are the types of force we familiar with? Now see the next one question. So what are the force that familiar with? So we know that there are different kinds of force familiar with. So 5 types of force are we familiar with? So there are different kinds of force familiar with us. First one is a gravitational force. First one I don't know. Gravitational force. Number 2, electromagnetic force. Next one, nuclear force. Balanced force. And last one is unbalanced force. So these forces are we
familiar with. The first one is the gravitational force, second one is the electromagnetic force, nuclear force, balanced force, and the unbalanced force. Understand? So today's stop here will be continue on the next session. So in this session already we discussed state Newton's three law of motion. Next one, what is the meaning of a circular motion? I give one example. What is meant by centripetal force? Give one example. And last one is what types of force are we familiar with? Understand? Okay. Today's stuff here will be continue on next session.